Yeah, good evening. Hello, everyone. Okay, so today we are doing the important questions from surface area volume, the chapter 13 of your NCERT. आज उसके सारे important questions हम करेंगे. Yeah, so, good evening. Hello, everyone. So, उस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे वो चैप्टर को करना चाहिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, सारे हम लोग आज करेंगे. ओके, so let's start in another 1 or 2 minutes. We'll start. So the last YouTube class of this year. So आज the last day of the year. So let's finish the surface area volume. क्या क्या important formulas है, कैसे इस चीज को learn करना चाहिए, क्या है इसके तरीके. We will learn everything. We will see how it is important. And yes, so the chapter that we are doing today is surface area and volume. Very important chapter. And confirm 4 marker is there. और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मूला. यू नीड टू नो द फॉर्मूला और कैलकुलेशन. और अगर ये फॉर्मूला और कैलकुलेशन आपका ठीक है तो सरफेस एरिया वॉल्यूम इज वेरी इजी फॉर यू. ये चैप्टर सेम टू सेम आपके क्लास 9th में भी था. 9th में वी हैव लर्न दिस चैप्टर. सारे फॉर्मूलाज आए थे बट वहाँ पे इंडिविजुअल फिगर्स था. नाउ यू हैव कंबाइंड फिगर्स. सो सारे कंबाइंड फिगर्स है. सो वी विल लर्न all these today. So this is the topic for today. Most important questions for boards in surface area and volume, class 10. कौन सा चैप्टर से किस क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 marker, 2 marker, 3 markers and 4 markers. Now the policies थोड़ा सा चेंज हुआ है. Now it's 1, 2, 3 and 5 marker. तो किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे ये क्लास है. So let's start it and let's finish it off in a good fashion. So to start with, it's about me, myself, Kunal Chauhan, and I have been teaching class 10th, 11th, 10th, 12th on Unacademy. So we are doing good. Almost the syllabus is complete. Revision is also done. Those who are still not on Plus platform, I will suggest it is the India's best platform. You come on board, join the online classes. You have many benefits. Just do join it. So let's put our thinking caps on and let's crack it. So time to time मैं आपको पूछने के लिए दूंगा. वॉट एवर डाउट्स यू हैव, जो भी डाउट्स हैं आप सेंड कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द डाउट्स. राइट, शुड वी स्टार्ट देन? चल, सो लेट्स स्टार्ट. हेलो संजय, हेलो अक्षांश, आकांक्षा. चल, सो या विल स्टार्ट विद दिस सरफेस एरिया वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने लास्ट क्लास भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से किया था एक सेशन, उस पे था कि फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. तो यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड इट वाज प्लेन फिगर. नाउ वी आर डीलिंग विद द 3D फिगर टुडे. तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे. क्या क्या फॉर्मूला जरूरी है, जस्ट राइट इट डाउन. फॉर्मूलाज के बाद जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट. फिर मैं इसको फिर वाइंड अप करूंगा क्या क्या क्वेश्चंस है. राइट, एंड रेगुलरली वी हैव दीज सेशंस टू अपडेट यू अबाउट द डिफरेंट चैप्टर्स. नेक्स्ट मंथ फिर हम कुछ नए चीज से आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज अबाउट क्यूबॉइड फर्स्ट. सो क्यूबॉइड के क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो क्यूबॉइड में या 3D फिगर में 3 चीज हमें जानना है. कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज व्हाट, 2 into H into L plus B, जिसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं.
area of 4 walls 2 into h into L plus B. Then you have TSA, total surface area 2 into LB plus BH plus HL, ये total surface area है. And volume is L into B into H, right? So this is cuboid. Then same thing about cube का CSA कर्व सरफेस एरिया जो है वो 4a स्क्वायर होता है. TSA टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है एंड वॉल्यूम इज a क्यूब. नाउ रिमेंबर वन थिंग, टोटल सरफेस एरिया जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता. टोटल सरफेस एरिया टोटली डिपेंड्स अपॉन द फिगर. अगर मान लो क्यूब है या क्यूबॉइड है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, देन टोटल सरफेस एरिया विल बी 5a स्क्वायर. यहाँ पे एक LB कम हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस LB हो जाएगा. इस बात को ध्यान रखना. So when we talk about total surface area, is the total surface covered, right? But suppose it's a cuboid with open top. अगर ऊपर से खुला है तो obviously हम एक ही LB लेंगे, दो LB नहीं लेंगे, right? Next thing is about cylinder. So suppose this is the cylinder, right? So ये आपका रेडियस, ये हाइट. इसमें CSA होता है कर्व सरफेस एरिया. सो CSA कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई RH. TSA टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई R H प्लस R. अगेन एज आई सेड, टोटल सरफेस एरिया जैसे कोई फॉर्मूला नहीं होता. अगर यही बॉक्स ऊपर से खुला होता, इट्स ओपन, ठीक है, ओपन बॉक्स होता, इट्स नॉट क्लोज्ड. सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पेन स्टैंड. पेन स्टैंड में ऊपर खुला है, so then in that case 2 pi RH plus pi R square ही होगा. Only the base will be taken, not the top. Then the volume of the cylinder is pi R square, area of the base into height. After cylinder, the 3D figure is cone, right? Cone. So what about the cone? Cone CSA, it's the same. The figure is like this. So shape of a softie, cornetto that you eat. सो या स्लांट हाइट है ये. तो एक तो स्लांट हाइट का ही रिलेशन होता है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है. कोन, इसका CSA कर्व सरफेस एरिया पाई RL होता है. L इज द स्लांट हाइट और TSA पाई RL प्लस द बेस पाई R स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द सिलेंडर, 1/3 पाई R स्क्वायर H, राइट? क्लियर है ये? Yes. So that's the volume of these. Now let's do with the sphere and hemisphere. और एक hemispherical cell है और hollow cylindrical cell है, वो भी देख लेते हैं. So about the sphere, when we talk about sphere, इसमें TSA CSA नहीं होता, एक ही surface area होता है, which is 4 pi R square. And best part about sphere hemisphere is it just needs radius. So volume of the sphere is 4/3 pi R cube. And yeah, hemisphere is half the sphere. So hemisphere CSA is half the sphere, which is 2 pi R square. TSA बाउल जो होता है, बाउल, ठीक है, बाउल पे नीचे बेस ऐड कर दो तो दैट इज 3 पाई R स्क्वायर. एंड देन वॉल्यूम विच इज 2/3 पाई R क्यूब. ये हेमिस्फीयर. इनके अलावा दो चीज और है. एक है तुम्हारा हेमिस्फेरिकल शेल. हेमिस्फेरिकल शेल ये कभी कभी आ जाता है इन योर प्री बोर्ड्स, स्कूल फाइनल्स, इसमें आ सकता है. तो हेमिस्फेरिकल शेल में वॉल्यूम का तो कोई दिक्कत नहीं है. वॉल्यूम तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर हो जाएगा. दिस द हेमिस्फेरिकल शेल. ओके, सो इसमें जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो. सपोज आउटर और इनर की बात कर ले. आउटर रेडियस इज R
capital R and inner radius is small r, then total surface area will be outer 2 pi r square, inner 2 pi r square, and the ring which is pi r square minus r square, ये रिंग. अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो सिंपल है, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब. ठीक है, तो ये मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो कि जरूरत है, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दैट. 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, वो जितने भी हैं, विल स्टार्ट विद दैट. सो हेमिस्फेरिकल सेल के बाद एक हॉलो सिलेंडर भी पता होना चाहिए आप लोग को. हॉलो सिलेंडर, ओके, पाइप है ना, पाइप पाइप टाइप के जो भी सवाल होते हैं, हॉलो सिलेंडर है उसमें should know this figure, should know the volume, sometime it comes. So hollow cylinder में सबसे पहले आगे total surface area, so that's the outer curve surface area 2 pi r h, take the height to be h, and the radius as inner radius as small r, capital radius as r, we'll keep it same. So inner curve surface area, outer curve surface area प्लस 2 रिंग है, ऊपर भी एक रिंग है, नीचे भी एक रिंग है, सो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग. So this is total surface area. And what about the volume? So volume is obviously pi h r square minus r. So ये total formulas है. ये लास्ट वाले को ले लो, this one and this one. ये constitute all these formulas for total surface area volume. So now if you have any doubts, you can send it to me. बस 5 बजे स्टार्ट हुआ है आकांक्षा, वी जस्ट स्टार्टेड. ठीक है, चलो, तो या लेट्स मूव ऑन विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट. सो लेट्स मूव ऑन नाउ. मूविंग ऑन टू द 1 मार्कर, हर एक के बारे में मैं बताऊंगा. एक बार ये भी बता दें कि सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज किया है. नाउ 32 मार्क्स के 1 मार्कर है, राइट. तो यू हैव 32 मार्क्स जो कि 1 मार्क्स के आएंगे. अब वो कैसे, तो इन लोगों ने अब 2 सेक्शंस कर दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. ये अच्छे से समझना है, सेक्शन ए सेक्शन बी, बिकॉज आई फील कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लो तो फिर बोर्ड का पेपर करना आसान हो जाता है. एंड इट प्रिपेयर्स यू वेल टू डू द एग्जाम एज वेल. ठीक है, आप अकॉर्डिंगली जनवरी और फरवरी प्लान करें. सेक्शन ए में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और सेक्शन बी में 3 पार्ट है, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5. ना 32 मार्क्स के एज ऐसे 1 मार्कर है, वो कैसे, तो 1 मार्कर 16 मार्क्स के तो 1 मार्कर है, शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं. उसके बाद 4 केस स्टडी सम. और ये केस स्टडी सम पे हमने पूरे मंथ रिवीजन किया है ऑन माय प्लस प्लेटफॉर्म. 4 केस स्टडी सम्स हैं. इस 4 केस स्टडी में हर एक में 5-5 पार्ट है, बट आपको पांचों पार्ट नहीं करना है, कोई भी 4 पार्ट कर सकते हैं. सो दिस इज एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. सो एवरी सम हैज 5 पार्ट्स, यू कैन से A, B, C, D and E type. So do any 4. So when you do 4, 4, 4, 4, 4, so आप 4 क्वेश्चन 4 into 4, तो यहाँ भी 16 क्वेश्चन हो जाएंगे. यहाँ भी टोटल 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, तो टोटल 32 मार्क्स है. अब केस स्टडी का एक भी सवाल जो होगा वो पूरे चैप्टर पे बेस्ड होगा. तो हो सकता है एक सरफेस एरिया वॉल्यूम पे केस स्टडी का सम हो जाए, एक सम केस स्टडी का सरफेस एरिया वॉल्यूम पे आ जाए, and it will be divided into 5 sub parts and you need to answer those. तो वही. फिर सेक्शन बी में 3 मार्कर, थर्ड पार्ट जो है वो 2 मार्क्स के हैं, फोर्थ पार्ट जो 3 मार्क्स के हैं, और जो फिफ्थ पार्ट है वो 5 मार्क्स के. इस पे एक डिटेल नेक्स्ट मंथ हम एक सेशन लाएंगे जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ द पेपर इज ऑल अबाउट. विल एक्सप्लेन दैट. तो अभी यही समझना है कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 और 5 मार्कर्स है. तो जो पहले 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 थे वो वही है, बट जो 4 मार्कर्स थे लास्ट ईयर तक, अब वो 5 मार्कर्स बदल गए. ठीक है,
सो वन मार्कर में एज सच बहुत क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से डोंट एक्सपेक्ट, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड. इवन इफ देर इज अ रेडियस एंड यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम और समथिंग, you need some space, you need some time. So that's why it will be a two marker. So rarely you will find one marker sum, but हाँ एक केस स्टडी का सवाल हो सकता है. अगर वो केस स्टडी का सवाल होगा तो देन यू हैव सब पार्ट, पूरा सवाल ही करना होगा, वो 4 मार्क्स का ही सवाल होगा, 5 मार्क्स का सवाल होगा, कोई भी 4 पार्ट करना होगा. So you need to do that. Hope I am clear with that. So now, so the first sum, the short answer type question: if two cubes of edge 7 centimeter each are joined end to end, then find the surface area of the resulting cuboid. ये आपके एनसीईआरटी में भी है. अगर दो क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दे तो ऑब्वियसली जो बनेगा वो ऑब्वियसली क्यूबॉइड हो जाएगा. दिस तो वी नो. अगर वो क्यूबॉइड हो गया, एच 7 है, एच 7 है, तो व्हाट विल बी द न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ एंड न्यू हाइट. सो लेंथ इज 14 centimeter, breadth is 7 centimeter, and height is 7 centimeter, right? Rest you can find. So if two cubes of edge 7 centimeter each are joined, then find the surface area of the resulting cuboid. So surface area आपको, I'm not here to solve these sums, I'm just telling you what type of sum can come. Okay, so आप surface area निकालना है 2 into LB plus BH plus HL वाले फॉर्मूला में डाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा. बट अगेन इट्स एक्सपेक्टिंग टू मच इन 1 मार्क्स. 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो rarely you will find 1 mark straight forward from this. So there are other chapters also, but if it comes, it will be direct value, direct solutions, and the calculation will be simple, I feel that. Okay, now moving on to the 2 mark का sums. So 2 marks के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन भी 2 marks का हो सकता है, या कोई ऑप्शंस दे दिया, या एज आई सेड केस स्टडी के सवाल कोई आ सकते हैं. इस सवाल को देखो, शॉर्ट आंसर टाइप 2 marks क्वेश्चन. A solid metal cone with radius of the base 12 centimeter and height 14 centimeter is melted to form a spherical solid balls of diameter 6 centimeter each. Find the number of ball thus formed. तो ये आपके थर्ड एक्सरसाइज से है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन डू एक्सपेक्ट इन अ 2 mark का सम. ठीक है, आइदर 2 और 3. तो इसमें करना क्या है, मेनी पीपल क्या गलती करते हैं वो देखो, इसको सॉल्व करने लगते हैं इंडिविजुअली एंड देन दे गेट द नंबर ऑफ बॉल्स. क्या करना चाहिए आपको, देयर आर 2 पार्ट्स, एक कोन है और एक स्फीयर है. कोन के मेल्ट करके, कोन को मेल्ट करके यू आर फॉर्मिंग स्फेरिकल बॉल्स जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है. तो डायमीटर अगर स्फीयर का 6 सेंटीमीटर है तो मोमेंट वी फाइंड द रेडियस एज 3 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू. वी नो द रेडियस. सिमिलरली यहाँ पे रेडियस इज गिवन, metal, solid metal cone with radius of base 12 centimeter and height 24 centimeter. So this is radius 12 centimeter. Height is what? Height is 24 centimeter, right? It's melted to form a spherical solid cones of this. So obviously अगर melt कर रहे हैं तो दोनों का volume same होगा. So what's the volume of this? It's 1/3 pi r square h. Now I suggest कि आप बिना वैल्यू पुट किए हुए आप सीधा सॉल्यूशन पे. मेनी पीपल सॉल्व दिस वैल्यू देन दे डिवाइड. ऐसा नहीं करते. टू फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स फॉर्म इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कोन जो आपके पास था. क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन था, डिवाइडेड बाय सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दो, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. तो ये आपको नंबर ऑफ कोन्स दे देगा. दिस विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी वेरी सिंपल. सी हाउ. ठीक है, इफ यू डू इट दिस वे it's very easy. So 1/3 pi r square h by 4/3 pi r cube. So we can easily see this pi by 3 gets cancelled. So what is left, r square h. Now what is r? Small r is 12. So this is 12 into 12 into h, which is 24, by, there is a 4 left, into r cube, that's capital R, r of the sphere. See this, 3 into 3 into 3. This easily gets cancelled. 3 4 times 3 8 times, and you easily get the answer 32 number of balls.
नहीं तो जनरली क्या करते हैं, पाई में सारा इसको सॉल्व किया, डेसिमल्स में आंसर आते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस टाइप ऑफ सम व्हिच इज द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी, don't do the calculation individually, just combine it, get the answer. Now the next sum. So after the 2 markers I will give you time to ask the doubt, so whatever doubts you have just send it, I will try to give it in few minutes. So the diameter of metallic sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into a wire having diameter of cross section as 0.2 centimeter. Find the length of the wire. ठीक है, तो उसी टाइप का सवाल है as I suggested. So यहाँ पे एक sphere है और wire. Now wire is in which shape? Wire का shape cylindrical होता है. Wire is cylinder. Okay. So this is the cylindrical. ये wire का जो shape है cylindrical है और obviously sphere तो है. Wire is in cylindrical shape. Now it says the diameter of metallic sphere. So diameter is 6 centimeter. So that means the radius is 3 centimeter. It is melted and drawn into a wire. इसको melt करके हमने wire बनाया. Having diameter of cross section this. So diameter of cross section is 0.2 centimeter. So therefore the radius is 0.1 centimeter. Now find the length. So we don't know the height, but we know one thing. Their volumes will be same. So volume of cylinder will be equal to volume of sphere, right? So volume of cylinder is what? It is pi r square h is equal to 4 by 3 pi r cube. So you can cancel this pi, not needed. So h you need to find, that's 4 r cube by 3 r square. That will give you the height. Height is basically the length. So 4 into 3 into 3 into 3 by 3 into r square is 0.1 into 0.1. So this gets cancelled. 4 3s are 12. 12 3s are 36 into 100 centimeter, which is nothing but 36 meter. इतने वायर ये हाइट आ गया इजिली, कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ऑन द राइट हैंड साइड. इफ द कैलकुलेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड देन इट विल बी अ 3 मार्कर्स. नहीं तो डायरेक्टली ये सब 2 मार्कर्स के सब होगा, राइट. Next question, same. A semicircular sheet of metal of diameter. This is bent into an open conical cup. Find the depth and capacity of the cup. Okay, so this was a circular, semicircular sheet. ये semicircular sheet था और इसको बेंड करके एक कोन बना दिया गया. This is the bented and एक कोन बन गया. You can see this radius, diameter 28. So the radius is 14. Right, so the diameter was given 28 centimeter. So the moment diameter is given, always write the radius. So radius will be 14. A semicircular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent into an open conical cup. So ये जो radius है, you have joined this. So this is O, this is A, and this is B. तो ये OA और OB को हमने join कर दिया. Just join this OA and OB. Just like this. तो ये semicircular था, हमने ऐसे करके join कर दिया. So when you join OA and OB, it will form a conical cup with this slant height as 14. ये जो radius है, वो कोन का slant height हो जाएगा. और ये जो circumference है, ठीक है. So take this circumference, the radius of this to be r. ये जो circumference है, that is basically the semicircle. ठीक है. तो ये जो 2 pi कैपिटल आर ले लिए हमने. तो ये जो इसका रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस है, दैट इज इक्वल टू पाई इनटू आर, द सेमी सर्कल, ओके, द हाफ सर्कल. दिस पोर्शन, दिस ACB became the circumference, right? So 2 pi r is this. So we can say pi cancel. So we can say r is r by 2. वो जो रेडियस है 40, तो हमारा वो 7 सेंटीमीटर हो गया. सो स्लांट हाइट इज 40, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. फाइंड द डेप्थ. डेप्थ इज बेसिकली द हाइट. हाइट हम निकाल लेंगे.
height is basically under root of L square minus R square, इससे हमारा height आ जाएगा, और capacity is basically volume which is 1/3 pi R square H और R आने के बाद you can substitute and get the answer. But again थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ट्रिकी है, थोड़ा ज्यादा है, तो मे बी ये 3 मार्कर्स का भी हो सकता है, but these are good questions just related to this. So you can see the 2 markers are basically based on the third exercise. इधर से क्या बना रहे, प्लेन फिगर से यहाँ 3D बना दिया, लास्ट 2 क्वेश्चंस में स्फीयर से सिलेंडर बना रहे थे, एक में कोन से हम स्फीयर बना रहे थे, राइट. See this one, the fifth one, a solid cuboidal slab of iron of dimension 77 centimeter into 10 centimeter into 17 centimeter is used to cast an iron pipe. Cuboidal है, length breadth height है, used to cast an iron pipe. If the outer diameter of the pipe is 5 centimeter and thickness is this, then calculate the length of the pipe. यहाँ पे आपका यूज क्या आएगा, अभी जो मैंने बताया था, hollow cylinder. So obviously pipe जो है शेप में होगा. So this is the pipe. As I said, this is hollow cylinder. So इसका वॉल्यूम जो है क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, हमने हाइट का एच ले लिया, और छोटा आर कैपिटल आर ये दिया हुआ है कि if the outer diameter of the pipe is 5 centimeter, so outer diameter means capital R is 5 centimeter, that means outer diameter is 5 centimeter, sorry, so the capital R is 2.5 centimeter and thickness is 0.5 centimeter, so radius is 2.5 minus 0.5, so अंदर का radius 2 centimeter. Okay, so volume of pipe जो है वो this है, ठीक है, outer volume minus inner volume which is pi h r square minus r square. ऐसे कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगा. इससे पहले ये दिया हुआ है, ये जो क्यूबॉइडल ब्लॉक है, the solid cuboidal slab of iron, इसी को मेल्ट करके ये बनाया गया. 77 centimeter, 10 centimeter, 17 centimeter is used to cast an iron pipe. If the outer diameter of the pipe is this, thickness is this, then calculate the length of the pipe. हमें हाइट चाहिए, so length, breadth and height तो पहले दिया हुआ. length is 77 centimeter, breadth is 10 centimeter and height is 17 centimeter. So volume of slab, volume of iron slab भी आपका क्या है, दिस इज कैपिटल L इंटू बी इंटू एच, ये दोनों बराबर होगा. इससे हमारा हाइट आ जाएगा, बिकॉज हमें लेंथ ऑफ द पाइप चाहिए, हाइट इज अननोन, सो वी नीड टू फाइंड द हाइट. सो बोथ आर इक्वल, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं. पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. So yeah, so pi, which is 22/7 into h हमें नहीं पता, r square which is 2.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर is equal to length 77 into 10 into height is 17, right? So now h 77 into 10 into 17 into 7, राइट. ये 7 कहां से है, ये वाला 7, वो 22 नीचे. देखो कैलकुलेशन को कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी इज 4.5 एंड a माइनस बी इज 0.5. अब इसको कैलकुलेशन कर लो. 11 2 टाइम्स 11 7, right? So and then calculate it, this is centimeter, that will be giving you the answer, right? Clear? So yes, next sum. Rainwater of roof this drain out into a conical vessel, have diameter of the base 2 meter and height this. If the vessel is just full, then find the rainfall. So ये भी वही है, volumes are same. तो ये roof है, but we don't know the rainfall. Okay, so suppose ये roof है, एंड इस रूफ के इस कॉर्नर पे हमने एक सपोज
एक ड्रिलिंग पाइप लगा दिया और इससे ये जो वाटर है वो सारे हम इस टैंक में कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ, ये दिया हुआ है लेंथ इज 22 मीटर, breadth is 20 meter, height we don't know, that is dropped having a diameter from this drain into a conical vessel having diameter of the base this and this. So this is not cylindrical, sorry, this is conical, right? So this is conical, a conical vessel. So obviously दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो L into B into H will be equal to 1/3 pi r square h. ये इक्वल करके आपको क्या निकालना है? हाइट. ये आपको हाइट निकालना है. Rest is given, diameter of the base is given, diameter is 2 meter, therefore the radius is 1 meter and height is 3.5 meter. So these are the two marker sums which can come. So yes. Next one, from a solid cube of side 7 centimeter, a conical cavity of height this and radius this is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. So cube है, cube से हमने क्यूब से हमने कौन बाहर निकाल दिया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट? सो दैट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब is a cube minus volume of cone is 1/3 pi r square h. So solid cube of side A is 7 centimeter, conical cavity of height, so conical cavity of height 7 centimeter, radius this, so radius is 3 centimeter and height is 7 centimeter. Put the formula, get the answer. That's the basics of 2 marks question. So if you have any doubts now, you can send it to me. We'll clear your doubts. Yeah. So if you have any doubts, you can send it to me and I can answer it. Hello Aman. Okay Abhinav. Yes. Yeah. Hi Adit. Frustum is not coming. Frustum is not in the syllabus. Hello Chanda. Hello. Okay. So yes. So if you have any doubts, you can send it to me. Else we can proceed with the 2 markers now. 2 markers पे चल सकते हैं. Yeah. No doubts. Yes. Sure. So let's move on to the 3 markers now. So ये 2 markers हो गए और now let's move on to the 3 markers. And as I have said, you need to make a strategy how to attempt your questions. अब दिसंबर खत्म हो गया. Now you are left with January, February and March most probably. ठीक है, तो इसमें आपको I feel आपको मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स करना चाहिए. राइट. सो मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स कीजिए और बोर्ड पेपर्स को कंटेक्स्ट पे व्हाट एवर द न्यू सैम्पल पेपर इज वो देखो. न्यू सैम्पल के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके सैम्पल पेपर जरूर करो. सैम्पल पेपर विल टेल यू कहाँ पे तुम लैक कर रहे हो और जहाँ पे भी लैक कर रहे हो उस चैप्टर को अच्छे से करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव मार्क्स एंड मेक अ टारगेट ऑफ 5 to 8 मार्क्स पर वीक. ठीक है, ज्यादा टारगेट नहीं करना है, एक दिन 1 मार्क्स टारगेट करो तो इट विल बी डन. ठीक है, good Kailash, good. So now moving on to the 3 markers now. ठीक है, 3 markers खत्म करके फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा. So you can answer it yeah whenever. Okay, next 3 markers में you can see a vessel is in the form of a hollow cylinder
hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो एक hollow hemisphere है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर, राइट. सो vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. So the moment it says diameter, at that point only write the radius also. So radius is 7 centimeter and total height of the vessel. अब ये vessel का total height दिया हुआ है 13 centimeter. अगर radius आपका 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा. So this is also 7. So ये भी 7, ये 7. So ये जो remaining distance है, this is 6, this is 6. Okay, so this is 7, this is 6. So diameter is 14, radius is 7 और height of the cylinder जो है वो आपका 6 centimeter. So ये need to calculate this because this is 7, so this will be 6. Total height दिया हुआ. Find the inner surface area of the vessel. Now this is easy. So inner surface area will be, so as I say, surface area, inner surface area. Inner surface area क्या होगा? Inner surface area will be 2 pi r square, the curved surface area of hemisphere, plus curved surface area of cylinder 2 pi rh. Radius दोनों में सेम है इसलिए मैंने r ही लिया है और height is different. Height is 6 centimeter. Just put the value. But before calculating, I've always taught make your calculation simple. Take that 2 pi r common. R common निकल जाएगा. Calculation आसान होगा. ठीक है? You can see that this is 2 into 22 by 7. देखो radius 7 है. ये 7 plus 6 कट गया. देखो 44 into 13 जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर वही आपका आंसर होगा. ठीक है? So make your calculation simple. Formulas are easy. Learn them. Try to revise it daily and do the calculation well. तो ये चैप्टर आपके हाथ में. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. धीरे धीरे क्वेश्चन का हो सकता है 4 मार्कर्स आते आते थोड़ा सा लेवल टफ हो जाए. फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस मोर. यू नीड टू डू माय सैंपल पेपर्स. यू नीड टू डू माय मॉड्यूल्स. उसमें बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस भी हैं. हायर ऑर्डर थिंकिंग सम्स है. सो डू दैट आल्सो. ओके. सो नाउ moving to the next question, which is question number 9. A metallic cylinder has radius 3 centimeter and height 5 centimeter. Metallic cylinder है, right? Radius 3 centimeter, metallic का radius is 3 centimeter and height is 5 centimeter. It is made of a metal A. To reduce its weight, a conical hole is drilled in the cylinder as shown and it is completely filled with lighter metal B. इसमें से ये कोनिकल थोड़ा सा इसको हल्का बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसमें ये ड्रिलिंग किया और यहाँ पे एक लाइटर मेटल बी डाल दिया. द कोनिकल होल हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स डेप्थ इज दिस. अब चलो इसको अगर कैपिटल आर मान लो और इसको कैपिटल एच मान लो. ओके, हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर को कैपिटल आर मान लिया और हाइट को कैपिटल एच मान लिया. सिमिलरली स्मॉल रेडियस, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द कोन, that is 3/2 centimeter और हाइट जो है स्मॉल एच ले लिया, that is 8/9 centimeter. ये छोटा सा है. Now it says calculate the ratio of the volume of metal A to the volume of metal B. तो अगेन इस तरीके के सवाल में भी जैसे मैंने 2 मार्कर्स में बताया था, you don't have to calculate पूरा when you want to find the ratio. So volume of A by volume of B बोला, ये भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. अगर वॉल्यूम ऑफ ए पहले बोला है बी तो यू कांट डू बी बाय ए. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ ए, ये जो ए है, द कोनिकल होल हैज दिस. अब इसमें एक चीज याद रखना है कि टू रिड्यूस दिस वेट कोनिकल होल इज ड्रिल्ड आउट इन दिस. अ metallic cylinder has radius 3 centimeter and height 5 centimeter. It is made of metal A. To reduce its weight, a conical hole is drilled out in the cylinder as shown and it is completely filled with lighter metal B. Conical hole has a radius of this. Calculate the ratio of the volume of metal A to the volume of metal B. तो पहले तो जो सिलेंडर था वही वॉल्यूम हमें चाहिए.
है, तो वॉल्यूम मेटल ए का था, ऑब्वियसली हम इसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम जो पहले था वही पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आप सीधा सीधा डाल दो, ये विल गेट सीधा सीधा आंसर, इसको ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, राइट, जस्ट लेट इट बी सिंपल एंड दिस इज द वे टू डू इट। इसमें जो पहले मेटल था वो मेटल ए ही था, तो यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोर। Next sum is question number 10. Circustent is in the form of a right circular cylinder and a right circular cone above it. Cylinder है, so these are the important questions that I said. These are the questions that are very important and this will definitely come in the board exams. These are the sums. इसको ध्यान देना है. A circustent is in the form of a right circular cylinder and a right circular cone above it. The diameter and height of the cylindrical part of the tent are 126 meter and this. So diameter of cylindrical part is 126 meter. So radius क्या होगा? 63 meter. And height जो है cylindrical part का वो कितना है? 5 meter. The total height of the tent is 21 meter. अब total height अगर यहां से यहां 21 है और सिलेंडर का हाइट 5 है, तो ऑब्वियसली 25 माइनस 5 करेंगे, so that will be the height of the cone, that is 16. so रेडियस कोन का, ये तो हमने सिलेंडर का देख लिया, दिस इज फॉर सिलेंडर, ओके। अब ये हम कोन का देख रहे हैं, ये जो कोन है उसका रेडियस तो सेम ही होगा जो सिलेंडर का ही है, 63 मीटर, विच इज सेम एज कैपिटल आर ओनली, राइट, बट हाइट अलग होगा, height will be 21 minus 5 which is 16 meter. Now it says the total height of this, find the total surface area of the tent. So total surface area will be curved surface area of cylinder which is 2 pi RH plus curved surface area of cone 2 pi RH. So 2 pi R capital H into pi कैपिटल आर एंड एल, और एल कैसे निकलेगा? वी नो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो इससे आप एल का वैल्यू निकाल लो, 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो भी एल आए फिर यहां डाल लो, बट ये याद रखना कि बिफोर दैट टेक दिस पाई आर कॉमन, देन ओनली योर कैलकुलेशन विल बी वेरी सिंपल। सो पाई आर विल बी 2h plus l. So this is the way to find the total surface area and use pi as 22/7. If it is given, you have to use this value only. Don't take 3.14, right? Or radius indicate भी कर रहा है, it's a multiple of 7, so better take that. ठीक है? So इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी में है और बहुत बार लास्ट 5-6 साल के पेपर्स देखो, उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम का डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिया है, ठीक है? So again, if you have any doubts, you can ask me. Else we'll proceed with the 4 markers. Okay, so yeah, so let's start and no doubts. Good. ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 4 मार्कर्स का। अब 4 मार्कर्स में जो पहले क्वेश्चंस आते थे वो फ्रस्टम का एक क्वेश्चन रहता था, या अगर तुम्हें याद हो the sums which are in फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के एंड में जहाँ पे थोड़ा सा स्पीड टाइम का होता था कि द क्वेश्चंस, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस नहीं आएगा इस साल बिकॉज यहाँ पे फ्रस्टम है, सो इट वोंट बी कमिंग, बट जो स्पीड वाले सवाल थे कि एक canal है, and the speed of the canal, the depth and height of the canal is given with, and the rate of flow of water is given, it is 3 kilometer per hour, तो half an hour में how much area it will irrigate,
So those type of sum can come, that can come in 4 markers, but again 4 markers has been deleted this year, so it's now 5 markers now. So practice those sums and practice hard this chapter, because there can be complicated questions from this chapter. So जितने भी तरीके के weird questions, complicated questions आ सकते हैं, I've tried to give this up. स्पीड वाले सवाल ध्यान रखना. अब जैसे 3 किलोमीटर पर आवर है, तो इनडायरेक्टली दिस इज द हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट तो दिया ही रहता है. So what is this 3 kilometer? So this is the length basically. मतलब 1 घंटे में 3000 मीटर में जितना पानी है वो यहाँ से बाहर आएगा. So this is indirectly the volume of cuboid and equal to the volume of cuboid again, because अगर ये फील्ड में जा रहा है तो फील्ड में जो भी पानी है वो लेंथ ब्रेथ के हिसाब से वो इसी पे ही होगा. राइट, क्लियर? क्या? ओके, now let's see this sum. A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted dome which contains 17.7 meter cube of air, and its internal diameter is equal to height of the crown of the vault above the floor. Find the height of the building. Right? A building is in the form of a cylinder. So एक building है, cylinder के form में है, and it has a dome like this. Okay, so a building is a form of a cylinder surmounted by a hemispherical wall dome which contains this much air. So the total volume is given. So volume of this is given 17.7 meter cube, and this volume is nothing but the volume of hemisphere, which is 2 by 3 pi r cube plus pi r square h. This is given 17.7, right? And its internal diameter, ये जो diameter है 2r is equal to height of the building. ये total height के बराबर. So diameter is equal to the height. Height is basically height of cylinder plus this is the radius. So this is equal to h plus r. So indirectly they have given radius and height both are same. ये सबसे पहला ये समझने की जरूरत था. जब given a diameter is equal to height of the crown of the vault above the floor. So यहाँ से यहाँ तक का height. So h, height of the cylinder, plus radius r, h plus r is given equal to diameter. So 2r is h plus r. So you can say r is height. So this is important to understand. Now it's very simple. So this is 2 by 3 pi r cube, and this is pi r square, and height is also r only. So you can say this is pi r cube by 3, pi r cube by 3. So pi r cube common, you can say 2 by 3 plus 1, which is 17.7. So pi r cube into 5 by 3 is equal to 17.7. So you can say r cube is equal to 17.7 into 3 by 5. नीचे pi is 22 by 7. So 22 नीचे and 7 ऊपर. Right? So calculate it, whatever comes, that will give you the value of capital R, and that capital R twice कर दो उसे, that will give you the height of the building. So this is how we solve these sums and complete these sums. As एक दो क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ सकता है, रेस्ट एज आई से सारे एनसीईआरटी से ही सवाल होंगे. 1 मार्कर्स पे थोड़ा ध्यान रखना. केस स्टडी सम्स एक नया चीज है, एंड मैंने वो प्लस प्लेटफॉर्म पे वो केस स्टडी सम्स किए हैं. सो आई हैव अ रेगुलर क्लास एवरी डे एट 2 to 3, जो मैं लेता हूँ क्लास 2 to 3 PM एवरी डे. सो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे 2 to 3 PM. जनवरी में जो भी क्लासेस होगी एट 2 o'clock होगी. And apart from that, we have special classes for different chapters where I take tests and all. So you can join that plus platform. Follow me on Academy. It's a good chance, and we are doing revisions thoroughly. We are having tests regularly. जो भी नया पैटर्न है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से. So avail the opportunity, and
Yeah, use this referral code KCLIVE to unlock the free platform of on Unacademy. Unacademy पे जो भी free platform है उसको भी unlock करने के लिए you need a code. Use this KCLIVE to avail these all benefits on the India's largest learning platform. So if you have any query, still you can ask. Else, this is the important thing, important chapter 13. मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स का ये कवर अप कर लिया. स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, विल डू इट समडे, नेक्स्ट मंथ वी विल डू दैट. रिकैप में यही है कि दिस चैप्टर इज ऑल बेस्ड ऑन फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन. फॉर्मूला डेली प्रैक्टिस करो, डेली लिखो, हो जाएगा. कैलकुलेशन में ट्राई टू टेक कॉमन्स, ट्राई टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस. जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा. जस्ट टेक द थिंग्स कॉमन, जैसे मैंने अभी दिखाया कि पाई आर स्क्वायर अगर है रेडियस से, मैं ट्राई टू टेक दैट कॉमन. सो होमवर्क, सो डू दैट 13.1, 13.2, 13.3 विथ एग्जाम्पल्स. सारे अच्छे से करो with examples. Complete all the sums, match the answers, try to make your calculation simple, and apart from that, solve sample papers regularly. Solve sample papers regularly, at least twice a week. Yeah, so twice a week कीजिए, ये आपके लिए बहुत beneficial होगा, right? So talking about Unacademy, this is Unacademy plus subscription plan है, क्लास 9th to 12th के लिए है. So these are the fee structures, and these are monthly fees, 3 months fees, 6 month fee. Go for a higher package so you get more benefit. And एक और feature है कि if you take class 9 subscription, so 10th, 11th, 12th is automatically open for you all. Similarly, अगर आप class 10th का subscription लेते हैं तो 11th, 12th के भी classes देख सकते हो. So I take class 10th, 11th and 12th. So if you take class 10th, 11th, 12th के भी classes आप देख सकते हो. Come and see whatever maths you have in class 11th, whatever maths you have in 12th. So almost the syllabus is done in all these classes, but we are revising with every chapters. Every week we have new batches coming up, live classes hai for all subjects daily, weekly quizzes hai, doubt solving, live classes hai every fourth class on plus platform, every fourth class. So this is very interesting. Every fourth class is doubt solving, so we take doubt from that. Now apart from that, we have practice questions test series. Next month से हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो गो फॉर दैट, राइट? सो सब्सक्राइब नाउ फॉर क्लास 9 to 12th और 10 to 12th. So this is will be really beneficial. Now एक और few months पहले से we have added a new feature, and that feature is the iconic subscription plan. So iconic subscription के plan क्या है? So whatever plan is there for plus, वो तो है ही. India's best educators, interactive live classes, live tests and quizzes, creative corner, ये सब है. Apart from that, you have personal mentor, live doubt solutions, parent connect and study planner. So you get a personal mentor to guide you well, to see that you are updated with everything. आप suppose कोई topic से, आप subject से घबरा रहे हो, you haven't planned, social studies हो या इंग्लिश हो या साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आपको कंफ्यूजन है, सो यू कैन गो फॉर इट. या हेलो युवराज, late to join, but we have a class at 6:30, Yuvraj. So we hope to see you at 6:30. So we did discuss about the surface area volumes today. So what are the important questions? We have seen that. Now, yes. So now take subscribe for class 9, 12. Join now, where there only one way to top all your exams. Plan earlier with Unacademy. Plan earlier by subscribing to your new features. Okay, so these are the new features, whether it's plus or conic, whatever you feel better, join it. The best way to prepare for CBSE class 6 to 12 is here. This is on India's best platform, best online platform. Subscribe early to gear up for success, and let's crack it. Yeah.
सो दिस द वे। और एक और फीचर है जो अनअकैडमी में अभी वी हैव added, it's ask a dot feature. So now if you're doing sample papers and so you are getting regular doubts, maybe आपके doubts clear नहीं हो पा रहे हैं या हमारी classes है, you have to wait for 1 day for that. तो जब भी class है, सुबह दोपहर शाम, जब भी कोई doubt है, just send it on an ask a doubt feature. That will help you to clear your doubts at that point only. So maths का हो, science हो, कोई भी topic का हो, so you can send that out and you will get a video solution within 2 hours of the moment you send it. उसके 2 घंटे के अंदर you will get a solution. So apart from that, you have to these are the benefits. ऐप में सारे मैथ्स के साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल हैं, अलजेब्रा कोऑर्डिनेट, इस तरीके से एप्स है, डाउनलोड इट and whatever the things is, you can download, you can save, you can watch the history and see the enrollments, everything is there. And yeah, you can connect with us, connect with the team, whatever problem you have, discuss with them and they will give you a ready solution. So इसके अलावा जो फीचर्स मैंने बताया था, टेस्ट, जो कि अभी बहुत जरूरत है बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सबका खत्म हो ही गया होगा. सो रिवीजन एंड दिस, सो नाउ यू हैव डेली T20 टेस्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन. सो ये एवरीडे T20 टेस्ट फॉर फाइनल एग्जाम्स, MCQ है, 3 PM मंडे टू फ्राइडे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST. सो हर दिन टेस्ट है और दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड एवरी Monday to Friday 3 PM हमारा टेस्ट है. दिस इज फॉर क्लास 10 and this is for class 9, right? Let's test SST via MCQ test series for class 10. Every Saturday hai. You have 30 questions every Saturday to practice entire social science. So this is just to check yourself ki whether you are updated with everything or not and how you are placed. आपने सही से पढ़ा है या नहीं? Because every subjects, every marks counts. So this is where we will help you all. ये physics challenger test series है for finals, test series for class 10. And if you are still struggling with physics, or if you are very good at physics, just check yourself. 20 questions every Wednesday to practice complete physics. Then you have physics challenger test series for finals. This is for class 9th, and this is every Wednesday at 2 PM. 20 questions every Wednesday to practice complete physics. Let's test SST by MCQ test series for class 9. ठीक है, जैसा 10th का है, same to same 9th. For maths also, let's test mathematics for finals test series for class 9th every Sunday 2 PM. Focus on these are the focus on tough questions of HOTS, we say HOTS, higher order thinking skill questions. Core mathematics test series hai. This is for 9th and 10th both every Sunday 2 PM. So let's test mathematics for final test series for class 10th every Sunday. Focus on tough questions and higher order thinking skill questions. Core mathematics test series. This is all available on Unacademy, right? So yes, join us. Ongoing batches every for class 9th and 10th. Prime batches, full syllabus for CBSE 2021. Precision batch for full revision for pre-boards, Monday to Thursday. Subjects covers maths and science. Let's crack NCRT full syllabus for pre-boards, Monday to Saturday. All subjects and all classes will be conducted in Hindi as well as English. Class notes will be available after every session. So like and share us, subscribe, download. This is all available on Google Play as well as App Store. And ongoing batches, I said this very important doubt solving feature, daily practice section and daily free test is available. Use this opportunity, and every week we are coming with something new, some new batch, right? So do join us, and yeah, see you all in my next class. I think next class will be launching soon in the month of January with new features. आज डेट शीट भी आ रहा है. We'll see what the CBSE says, what the education minister says, what's their plan, and when they are conducting the exam. And then next month we'll come up with this. We have to do statistics and probability. That will be my next target. And we'll come up with how to approach the exam, how to approach बोर्ड एग्जाम, कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर्स का बता दिया आपको. सो यू कैन
see my videos, you can share it, you can like it. So whatever you feel, just be in touch, be follow me on Unacademy to get everything. Okay, until then, thank you, bye, take care. Yes. Bye everyone.